प्रणाम सर। सर प्रणाम, सर प्रणाम जी प्रणाम। डीन साहब जुड़ गए हैं क्या? अब अभी जुड़े नहीं साहब। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर। जी मैडम नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार प्रणाम सर। नमस्कार। जरा मुझे एक बार बताइए, मेरी आवाज और वीडियो आ रहा है? क्योंकि होटल का नेटवर्क कैसा है मुझे पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है सर। बढ़िया। हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। सुप्रभा आ गई है? सर प्रणाम, सर प्रणाम। नमस्कार प्रणाम जी, सर। नमस्कार 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 प्रणाम नमस्कार दिनेश जी। सर। खंबेयात सर भी जुड़ गए हैं। अरे वाह, ठीक है। मेरा ख्याल है वो उन्होंने शेड्यूल देखा होगा। अच्छी तो सुप्रभा आपकी तरफ से अभी क्या हम तो 6 बजे का शेड्यूल है हमारा। जी सर। ओके ओके। तो एज पर शेड्यूल ही शुरू करें, नहीं तो थोड़ा अर्ली हो जाएगा। कुछ और लोग जुड़ना चाहते होंगे, वो ज्ञान से वंचित रह जाएंगे वो। जी सर, थोड़ा वेट कर लेते हैं 6 बजे। हाँ 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 हाँ, ठीक 6 बजे शुरू करेंगे और जैसे हम अपना टाइम लाइन फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करेंगे। Participants are requested to kindly mute their microphones. Santosh Aryan ji, please mute your microphone. ओके मैम।
Shall Can we So all the start, sir? best entire team. All the best entire team. मुकेश सर से परमिशन लीजिए। सर बिल्कुल, कुलपति जी जुड़ गए हैं क्या सर? ऐसी सूचना है कि वो किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं अभी तक, अच्छा सर, अच्छा सर, तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Okay, स्टार्ट करिए आशीष जी। Thank you, sir. Thank you so much. So, good evening to all dignitaries, guests, faculty members, scholars, and students. With great joy and immense pleasure, I, Astik Mishra, doctoral research scholar in the Department of Educational Studies, Mahatma Gandhi Central University, feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the celebration of National Entrepreneurship Day 2022. We are fortunate to have with us esteemed resource person of today's national webinar, Professor Rajesh P. Khambiat sir, National Institute of Technical Teachers Training and Research in Bhopal. Now, let us begin the program seeking blessings from the goddess Saraswati. I therefore invite Mr. Ranjay Kumar Patel, PhD research scholar for Saraswati Vandana. थैंक यू आस्तिक। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल भैया। थैंक यू। सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ श्री सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीरा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवन् बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। थैंक यू। Thank you so much, Ranjay Bhaiya, for Saraswati Vandana. Now I invite respected Dr. Mukesh Kumar sir, Head Department of Educational Studies, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for the formal introduction and welcoming of the guest. थैंक यू आस्तिक जी। Thank you, sir. महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण बिहार के शिक्षा संकाय द्वारा TVET द वे टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी चंपारण बिहार के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, जो कि कतिपय कारणों से व्यस्तता कारण नहीं उपस्थित हो सके, उनके प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं कि उनके प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। आज के मुख्य वक्ता हमारे इस सेमिनार के इमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर राजेश खंबायत जी हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर राजेश खंबायत जी एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं TVET की फील्ड में। आप फुल ब्राइट फेलो रहे हैं। प्रेजेंटली आप डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल में प्रोफेसर के पद पे आसीन हैं। आप पूर्व में पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद को सुशोभित कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट यूनेस्को में
बैंकॉक यूनेस्को के माध्यम से बैंकॉक, यूनेस्को यूनिवाक इंटरनेशनल सेंटर फॉर बॉन जर्मनी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट स्किल स्टैंडर्ड एंड करिकुलम फॉर कंबोडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड टीवीटी प्रोजेक्ट में भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही साथ फैकल्टी कंसल्टेंट के तौर पे आप कोलंबो में भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप इंटरनेशनल एक्रीडिएटर के तौर पे भी आप एशिया पैसिफिक एक्रीडिएशन सर्टिफिकेशन कमीशन फिलीपींस के लिए भी आप सेवाएं दे चुके हैं। टीवीटी फील्ड में आपका योगदान बड़ा ही सराहनीय रहा है। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामयी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज का इस कार्यक्रम के सूत्रधार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय के सम्मानित संकायाध्यक्ष गण, विभागाध्यक्ष गण, संकाय सदस्य गण, प्रतिभागी गण, विद्यार्थी गण एवं शोधार्थी गण, आप सभी का इस संगोष्ठी में स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वजनों का स्वागत एवं अभिनंदन है। ओवर टू मिस्टर आस्तिक मिश्रा। Thank you so much, sir. Thank you so much for the brief and formal introduction of today's guest. Now, to introduce the theme of the webinar, I now invite dynamic and charismatic educationalist Professor Ashish Srivastava, sir, Dean, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Over to you, sir. थैंक यू सो मच आस्तिक मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर राजेश खंबाया जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द ट्रू सूत्रधार ऑफ दिस इवेंट, मिस सुप्रभा दे, and all scholars of this School of Education, Mahatma Gandhi Central University, and all students for arranging such a wonderful, such a great evening at Mahatma Gandhi Central University virtually. Department of Education Studies, School of Education of this new university, emergent university, feels immense pleasure in welcoming our respected Vice Chancellor, Professor Anand Prakash ji, in absentia, because he is in some meeting and the meeting is somehow stretching long. Presence of all senior members from Mahatma Gandhi Central University is making our happiness manifold. Thank you so much for being with us. I welcome my colleague, especially Dr. Mukesh Kumar ji, Dr. Rashmi Shrivastava ji, Dr. Manisha Rani ji, Dr. Pathula Thomkar ji. With a special mention to Dr. मुकेश कुमार जी, क्योंकि आज मैं एक कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट पर हूं और ऐसा रिस्क था कि शायद जुड़ने में कुछ देर वेर हो सकती है, तो सर के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा थी, तो विशेष धन्यवाद डॉक्टर मुकेश कुमार जी का। एंड ऑल द रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एंड लर्नेड ऑडियंस, टुडे इज अ ग्रेट डे व्हेन वी आर वेलकमिंग वंडरफुल प्रोफेसर एंड अथॉरिटी ऑन द इशू, प्रोफेसर राजेश पी खंबाया जी, a professor of Department of Technical and Vocational Education and Training, NCERT Bhopal. As you can hear, Dr. Mukesh Kumar ji, सर का एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और आप इनके अनुभवों से जिस तरह से लाभान्वित होंगे वो तो अभी आने वाला समय बता रहा है। To me, honestly and frankly speaking, I am touched by the humility of our honorable guest today. क्योंकि और ये मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्रोफेसर राजेश पी खंबाया जी को हमारे स्कूल की तरफ से सबसे पहले सुप्रभा दे जी ने अप्रोच किया, उन्होंने ही उनको फॉर्मल इनवाइट किया, और एक स्कॉलर के इनविटेशन पर इतने बड़े प्रोफेसर का आना, हामी भरना, ये आपकी सज्जनता, आपकी महानता, आपके बड़प्पन को दिखाता है। सो आई एम टच्ड बाय द ह्यूमिलिटी ऑफ आवर ऑनरेबल गेस्ट. It is because of great academicians like you, the entire system of higher education is not only surviving but also leading too. So I welcome you, sir, on this virtual dais with a belief that soon you will be here with us in Mahatma Gandhi Central University, which is located at the historical piece of land that is Champaran. So thank you so much, sir, and welcome.
Today is November 9, we all know, and we are here to celebrate National Entrepreneurship Day. I will not say much on it as Mr. Prabhat Dey, the wonderful, passionate, brilliant, dedicated, hardworking, and above all, a scholar with great vision is going to share in detail. सुप्रभा को मैंने कल कहा कि मुझे क्या बोलना है, थोड़ा बता देना मुझे क्या बोलना है, तो उसने 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट भेज दिया और ऐसी परिस्थितियां है कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाया. So Suprabha will be sharing the entire issue in detail. Suprabha is working on this TVET in her PhD thesis. Entire credit goes to Ms. Suprabha Dey and entire team of scholars from Department of Education Studies. Just to apprise Professor Rajesh ji, fortunately this is a new department, and this new department is having a good team of scholars and colleagues. So Mr. Prabhat has assigned me basically to brief on the theme of this national webinar, TVET, the way towards entrepreneurship in India. My dear friends, my dear colleagues, we all are aware that we are living in, already we have passed 2 decades in 21st century. So we are aware of the needs of 21st century. We all are well aware of the sustainable development goals, and just to set the tone, I would like to recall here sustainable development goals, because technical and vocational education and training has an important role to play so far as achieving the different intents of sustainable development goals are concerned. We all know that this TVET is that part of education system that is providing courses and training programs related to employment. As a layman, we all are aware of the importance of entrepreneurship so far as entrepreneurship is, because this entrepreneurship is accelerating the economic growth worldwide. Entrepreneurship is promoting innovation worldwide. Entrepreneurship is having such potential which can promote social changes. Entrepreneurship is promoting research and industrial development. In this further, this entrepreneurship developing and improving the existing enterprises. So to conclude, supporting and promoting this entrepreneurship can have a positive impact on the country's economy, and even the existing arena of business and social, and this social entrepreneurship increases the likelihood of finding innovative solutions to social challenges faced by communities around the world. So with these words, I again congratulate all the scholars, all the colleagues of School of Education for creating such a wonderful momentum and academic environment at this new department. I welcome our highly learned guest once again, and request all the audience to take best out of this event. I feel that language is no bar, so don't hesitate in interacting, be it in Hindi medium or English medium, any कोई भी भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं. हम लोग सारी भाषाओं में जो कम्युनिकेशन की हमारी जो बिहार को और के दृष्टिगत जो भाषा है उनसे अवेयर हैं. So I wish you all good luck. I wish this webinar a great success. Thank you one and all. Thank you. Over to Astik ji. Thank you so much. Astik, unmute yourself. Sorry. Thank you so much, sir, for introducing the theme of the national webinar among all of us. Now, I call upon Ms. Suprabha Dey, Doctoral Research Scholar, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, to present on the topic Tagore's Vishwa Bharati, Fostering Entrepreneurship Mindset Through Education. Thank you, Astik. Over to you, Suprabha. Just let me know if... Thank you, Astik. Just let me know if my screen is visible. Okay. Are the slides visible, Astik? Yes.
Very good evening, all of you. Respected Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Anuprakash, respected Dean, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Sir, respected Head, Department of Education, our esteemed keynote speaker of this evening, Professor Rajesh P. Kambayat, Sir, all the respected faculty members of the School of Education, and all the participants. I am Gandhi Central University, Bihar, and I'll be presenting today on Tagore's Vishwa Bharati, fostering entrepreneurial mindset through education. At the onset, with the introduction, I would like to mention that Rabindranath Tagore, we all know, he was a great poet, writer, philosopher, social reformer, and visionary who believed in the education that can contribute for the holistic development of individuals. PPT are not visible. सुप्रभा, आपको एक बार पीपीटी फिर से प्रेजेंट करना होगा. आपका पीपीटी स्किप हो गया somehow. Okay, sir. Okay, sir. I'll present again. Is the presentation visible now? Yes, it is visible. Go ahead. It is visible, okay. Aztec, please confirm once again if it is visible. Yes, it is visible. You may Is it proceed. visible, Aztec? Yes, it is visible. Okay. So Tagore tried to live his. Okay, so Tagore tried to live his educational philosophy through Shanti Niketan, which is a university town, with the creation of Vishwa Bharati. Now, in 1901, Tagore started a Brahmacharya ashram, which was later known as Patha Bhavan, and this Patha Bhavan later grew into Vishwa Bharati University, which has several departments under it and 2 schools, namely Patha Bhavan and Shikha Chhatra. So Tagore believed that India lives in villages and nation cannot develop by enriching the urban only and neglecting the rural India. Therefore, Tagore devoted himself to create an institution, inculcating in them the spirit of self-reliance through education. These are few pictures of Vishwa Bharati, which we can see the students studying in open-air classrooms. Now, this is a very, catchy picture of Patha Bhavan, where students, they sit under the tree and amidst nature and they study. So, through this picture, we can also understand the various educational philosophy of Tagore, which is joyful learning. One of the important educational philosophies of Tagore was that there should be joy in learning. To very well depict that. Now, in my presentation, I'll be focusing on the curriculum of Vishwa Bharati, and curriculum of Vishwa Bharati fosters TVET and builds an entrepreneurial mindset. The curriculum that was introduced by Tagore in Vishwa Bharati is activity curriculum that envisages for a fullness of experience for learners, providing them the opportunity to acquire knowledge from multiple sources through subconscious process. The curriculum which was introduced by Tagore, it is related to our everyday life, and it inculcates or including cognitive, affective, and motor. So it has different regular subjects which we have in schools. But in addition to the regular academic subjects like math, science, history, literature, language, etc., there are practical activities like excursion, nature study, regional study, laboratory work, visiting museum, herbarium, horticulture, drawing, music, etc.
And also the learners are exposed to various handicraft work and skill works like woodwork, leatherwork, sculpture, metal work, textile making, including bandhani work, batik work, clay modeling, gardening, electrical education, etc. So all these subjects which are mentioned here, these are compulsory for the students till grade 8. After grade 8, the students, they are given options to choose a particular skill subject as their vocational paper. So from 8th standard and even in the higher secondary classes also, they choose it as their vocational paper. So apart from this, learners are also exposed to multitude of extracurricular activities like visiting nearby village. These things like visiting craftsmen, which is also mentioned in National Education Policy 2020. Like students, they are exposed to all these skill related education, that they go to the nearby villages, and there are some villages who are very known for or famous for their bandhani work. There are nearby villages near Shanti Niketan, which are very famous for their clay modeling or batik work. So students, they are and they come to know about the local craftsmen who are working in this area. So they get a chance to observe and understand skill education very closely. Apart from this, there are various fairs like festivals, handicraft mela, competitions, events, different type of fairs, etc., which are organized in the school, which teaches various life skills to these students, like working in a group, then interpersonal relationship, empathy, taking risks, facing failure, etc. So what happens is the students, when they are exposed to a compulsory vocational papers till elementary education, and after that get a chance to choose a particular vocational skill paper as as a vocational paper, they get quite a time to nurture their skills, and they kind of become masters in that skill in the school itself. So after passing out, many students, they, if in shortage of work, or if they do not get a chance to go for higher education, many of them start their own small scale businesses. So this is the curriculum is designed in such a way that it exposes the learners towards TVET competencies, towards entrepreneurial mindset. Now, if we see the pedagogy, Tagore envisaged a pedagogy of curriculum which is full of life and not at all mechanical and lifeless. It should be based on realistic lines that would reflect the social ideas and traditions of education, as well as the contemporary problems. So the method of imparting instruction connects the real life situation to concrete facts of nature and social work. Pedagogy is very much inspired by the project idea of D.V. and Kilpatrick, and the activity principle of Tagore very much triggers to the constructive and creative area of learners. Also, Tagore very much emphasizes on the importance of joy as the most valuable principle in educational method. And Tagore introduces the spirit of play into work, as he believes that if the spirit of play is wedded with the spirit of work, its outcome will be the happiest kind. So children, through playway method, they learn various intricacies of work education that provide them a better hold on the content, as well as they enjoy the process of learning. Concepts are very much interrelated. Suppose a teacher is teaching a subject, they present examples related to real life situations, related to how we can excel in how the different ways of doing gardening, or the different ways we can have a good technique for horticulture, etc. There is hands-on experience which is provided to the learners. And in addition to all this, like I mentioned, that there are visits to local artisans and craftsmen. Also, there are various Sahitya Sabhas which are organized, where students are exposed to brainstorming sessions in which they, in which they discuss on such topics related to skills, vocational education, and other related, other academic subjects as well. So now, if we focus on the avenues that are present in skill development and entrepreneurship in Vishwabharati. So as we have seen, the curriculum and pedagogy is so designed that it helps the learners to get exposed to TVET related competencies and help in their holistic development, also equipping them with livelihood skills, fostering creativity in them. Apart from this, Lok Shiksha Samsad was started in 1936, that helped education, which is still being continued there, and it helps education reach to those remote areas or remote villages who do not have the access to usual educational opportunities through non-formal mode. There is Shiksha Chakra, which started in 1937, that trains
village school teachers. There is a department called Shilpa Sadan, which provides skill trainings in batik work, leather work, handmade paper making, book binding, handmade packaging, pottery, handloom weaving, woodwork, and other entrepreneurial activities through various certificate courses as well as short-term training programs. Also, Sriniketan's Rural Reconstruction Department. Sriniketan is also a part of Shantiniketan, and it has got a Rural Reconstruction Department which adopts the empowering the village people through various skill trainings and vocational education related things. So these are the avenues which are present for skill development or entrepreneurship. And also, since we know Tagore was a great poet and he has written so many poems and songs, and there are so many festivals which are organized inside Shantiniketan where students they sing these songs, they recite these poems, where very much emphasis has been given to the dignity of labor and the important role work education has in our lives. So unconsciously, subconsciously, consciously, students are exposed, their mindsets are getting changed in such a way that they have got high regards for work education. So here I would like to quote that in NEP 2020, it mentions that the failure of vocational education in India since independence is because one of the reason is because the students, or the society considers vocational education inferior to mainstream education. So this is something contrary which I have seen in Tagore's Vishwabharati or in Patha Bhavan or in Sikha Shatra, that they have got high regards for vocational education. So I think this from the very primary classes they are given compulsory vocational exposure, as well as they are being taught that how much important work is in our lives. So this is how entrepreneurial as well as TVET or work education related mindsets are being given or implanted or inculcated in the minds of learners there. So I'll conclude my presentation that in entrepreneurship we all know is regarded very crucial to boost the economy, and the idea of infusing entrepreneurship into education will provide with skill shortages. So we in India we are so blessed, or we can say that we have scholars, we have people like Tagore and Gandhi who have always made basic education and fostering entrepreneurship therefore imperative for creating gainful employment opportunities in India, and thus it becomes a necessity to integrate TVET in the formal education system of India so that it can pave the way for entrepreneurship, and India can emerge as a self-reliant nation in its true sense. And Tagore's Shantiniketan learners. So these are few references which I have quoted over here through where I have got the insights also. And I would end my presentation with the lines of Tagore, that where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Thank you. Thank you, Ms. Subha, for your insightful and wonderful presentation. I must say that till you complete your PhD, we will be half done with our concept of TVET. And I think we can definitely submit a mini PhD on TVET. So now I take the privilege to invite our esteemed keynote speaker of today's event, Professor Rajesh P. Khambyat, sir, Department of Technical and Vocational Education and Training, NITTTR, Bhopal, to address on the pertinent issue, TVET, the way towards entrepreneurship in India. Welcome, sir. Sir, you are not audible. Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Okay, thank you. Honorable Vice Chancellor, Professor Anand Prakash ji, Mahatma Gandhi Central University, Bihar.
very respected Dr. Ashish Srivastava the Dean of School of Education, Mahatma Gandhi Central University of Bihar. Dr. Mukesh Kumarji, the Head of Department of School of Education. Madam Suprabha De, the Doctor Thesis Scholars. I think there is an echo coming probably. And most Suprabha, please important, mute yourself. Suprabha, please mute yourself. most importantly, all the distinguished scholars, respected faculties across different departments of Mahatma Gandhi Central University of Bihar. Let me begin by thanking Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Srivastava ji, and the entire team for thinking about me and inviting to be a part of today's a very important deliberation that we are going to have in the next few minutes long tonight. For the benefit of the participant, is it okay I speak in Hindi also so that more acceptance? And I think you are nodding your head tells me that I am on the right track. Thank you. मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप डे हम लोग आज मना रहे हैं भारत में, और इससे अच्छा और सेलिब्रेशन नहीं हो सकता जहां हम एक दूसरे की बातचीत सुने, अपनी अनुभव आपके साथ साझा करें और एक दूसरे से सीखे कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक नया रास्ता दे, नया डायमेंशन दे, नई ऊंचाइयां दे वगैरह। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है काफी मिक्स है। मैं अगर 1-2 मिनट के लिए आग्रह करूँ कि आप अगर अपना कैमरा ऑन कर सके, just for a couple of minutes, just to get me a feel who are my audience with whom I am talking. Just couple of minutes, that should be fine. Okay, if your bandwidth permits to you. Okay, yeah, go ahead. I can see. All right, thank you. आज की जो परिचर्चा है, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने साझा करूं, एंड देन प्रोबेबली just give me 1 or 2 minutes. I'm setting up the time. Can you please confirm? Can you see my presentation? Not yet, sir. Abhi? Not yet, sir. Not yet. Now? I think, Yes, I hope by yes. this time now you are able to see. Yes, yes. Yes, sir, it's visible. Okay. Okay, now let's make it, more interactive this session. I would request to all of you, you can stop me anytime. You can raise any question, or if I miss anything, you can also feel free to add. I think the theme is very relevant today and also in the near future, as we envisage to make these, today we are the third largest economy in the world. And we hope to accomplish 5 trillion economy by another year, that is by 2024. And I think in this context, today's deliberation is definitely going to help every one of us. I picked up a theme, drawing the inspiration from the National Education Policy 2020. And also I'm going to touch upon, we have another policy, that is National Skill Development and Entrepreneurship, which was released by Government of India in way back 2015. So taking these two policies and how we can, channelize our effort for bringing entrepreneurship. I'm sure many of our faculty must have gone through the National Education Policy. It's more than 2 years. Government of India, Honorable Prime Minister released the education policy.
And as you all know, this policy is around 66 pages. I repeat, ये जो policy है ये करीब 66 pages की है. और मजेदार बात इसमें ये है कि within these 66 pages, research and innovation, I repeat, research and innovation have been used 170 times in this document of National Education Policy. National Education Policy aims to contribute to the entrepreneurial ecosystem. I think this is very important for all of us. Entrepreneurial ecosystem through research and innovations in educational institutions. So I think we are very much in the right direction. Your university, my institution, we are all part of this big ecosystem. And this is where the institutions we are going to talk about it. So in my short presentation, मैं आपसे बात करूँगा little background. हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान देंगे. खास तौर से मैं आपका ध्यान वहां पर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें क्या इनोवेशंस की बात की गई, क्या नई चीजें इसमें लाई गई हैं, और खास तौर से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो आज हमारा थीमेटिक एरिया है उसके संबंध में क्या रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर बात करेंगे. We will also talk about the highlights, about the national education policy. और सबसे आखिरी में मैं अपने कुछ प्रयास जो हमने इस दिशा में एंटरप्रेन्योरशिप को लाने के लिए किए गए हैं उन चीजों को मैं आपके साथ साझा करूंगा. And if the time permits, maybe we'll have some question answers from all of you and all that one. I think we are all from the education, and education has a very, very important role to play. As far as if I take it, there are 4 E on which education has a very, very significant role to play. मेरे ख्याल से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था एजुकेशन पर निर्भर होती है. जितनी ज्यादा हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी होगी या हमारी जो लोक संख्या है, युवाओं की संख्या है, अगर उनको हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के साथ इक्विप करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. मैं तो कहूंगा एजुकेशन और स्किल्स अगर हम लेके आएंगे तो दैट विल बी मच मोर इम्पोर्टेंट. एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमी के साथ है. इट एनहांसेस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आवर ग्रेजुएट्स. इट आल्सो लीड्स टू एनहांसिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. और सबसे ज्यादा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. और मुझे लगता है आज का जो विषय है हमारा इसी पे संबंधित है. हायर एजुकेशन की जहां तक बात आती है, national education policy emphasizes that higher education must form the basis for knowledge creation, innovation, and thereby contributing to the national economy. If you see the entire document of national education policy, उसका जो vision है इस particular national education policy, it envision an India-centered education system. मतलब we are not going to borrow from anything else, but it is going to be centered on the India-centered education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to the all. And it governs by the principle that to identify and foster unique capabilities of each student by promoting creativity, critical thinking, to encourage logical decision making and innovations. I think we have all seen this one, so there is nothing to talk about it. I think very important for all of us is that what innovation it has brought as a part of major recommendation to the policy as that we are going to talk about it. I think we are all aware there are 2 major segments. One is school education and another is your higher education. And I think we have seen the entire architect of the entire education system has been revamped, very differently. Now we have a new architect that is 5 plus 3 plus 3 plus 4 as far as school education is concerned. And as far as higher education is concerned, then there will be 3 to 4 years of undergraduation, followed by 1 or 2 integrated postgraduate
stage degree program, then research stage, that is PhD, 3 to 4 years, and most importantly, this policy advocate lifelong learning. So education is a continuous process, and it starts from school education and it starts till the end of the life, and that is what the central idea of national education policy that we have seen. अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि to realize all these things, there are many significant changes Government of India has brought. I think we are all aware now the Higher Education Commission of India is going to be set up. National Accreditation Council will be, new architect will be coming up. National Research Foundation, NRF, will be created, which will allocate basically the research grant to various institutions, to the various players who are going to conduct the research, because that is the principal basis through which entrepreneurship will come, research and innovation leading to entrepreneurship. Now, there will be no standalone university, rather there will be multidisciplinary universities. Multidisciplinary autonomous colleges will be there, and most importantly, academic bank of credit, that is ABC, will be coming into the play. So these are major, innovation that has come through the national education policy. Most importantly, institution like the Mahatma Gandhi Central University and all the related higher education institutions will be setting up startup incubation center. मेरे ख्याल से ये सबसे important changes that we are going to see in the near future. हर institution में startup incubation centers will be there. इसका purpose ही यही है to promote the entrepreneur. This will come. Second important will be technology development centers, जहाँ पर new age, cutting edge technology, advanced technological development will take place in the universities. और सबसे important है कि centers in the frontier areas of research. देखिए पहले क्या होता था कि universities are going to create the researches, and those researches will be picked up, and industries will be, taking the technology from the universities or from the higher education institutions, converting into, product services for the larger community, for the society, for the country. Now it is going to be slightly different. Now the scene is very different. Now industries are investing on research and innovation. They are creating, frontier areas of technologies, new researches, and then those researches, those identified technologies are going to find input into our curriculum. Now this has to change. So again, this national education policy is highlighting that the researches will be conducted in the universities, and industries will be collaborating with these institutions and universities, and they will be drawing the technology development and bringing into products and innovations in their own field. And that's why, for that very reason, Center for Industry Academic Linkages will be strengthened, and then the partnership between the institutions and industry will be strengthened. And last but not the least, very important will be interdisciplinary research. So there will be no standalone, departments like civil, mechanical, electrical, electronic. Rather, we'll be having interdisciplinary research centers, including humanities and social science researches, all will be set up. I think it's a very important slide for all of us to understand that these are the major innovations that we are investigating. I talked to you about research, and you have to also understand that कि हमारा जो annual education expenditure है, it is around 4.43% of GDP as of now. And as per the national education policy, your allocation है, it will be reaching to around 6% of GDP for our education. So you will see that in the near future, काफी सारा बड़ा investment हमको education field में दिखाई देगा in terms of improving access, enhancing equity, enhancing the quality of education by enhancing the outlay of 6% GDP for the education. आपसे मैंने ये भी आग्रह किया था कि research और innovation बहुत important है, और वर्तमान में you will be surprised to know it is only 0.69% of GDP we are investing on the research and innovations. If you see the developed countries around the world, जैसे साउथ कोरिया का अगर हम उदाहरण लें,
So 4.2% of the GDP is invested for research and innovation. Israel, a small country like Israel, is already investing 4.3%. We are just 0.69. USA has 2.8% of GDP invested on research and innovation. And that's why this new policy advocate of targeting the global average, that is 3% of GDP for research and innovation. Because this is very important if you want to promote entrepreneurship in the society at large. अभी तक हमारा जो फोकस रहा है एजुकेशन में हाई स्टेक एग्जामिनेशन के तौर पर, और धीरे धीरे यू आर गोइंग टू सी अ न्यू चेंज इन अवर थॉट्स, और सबसे ज्यादा फोकस होगा मोर ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी कमिंग अप इन अ बिग वे थ्रू दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, जो मैडम दे ने कहा कि कैसे विश्व भारती आपकी एडवोकेसी करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. और अगर हम एनईपी की बात करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ हमको ये देखना होगा, अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कंट्रीज आर स्ट्राइविंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमीज एंड बिकम इंडिपेंडेंट. ये एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को दिया जाता है, और मुझे लगता है इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी समय पहले हमको एक जो नेशनल मिशन लेकर हमारे सामने रखा था, और वो इट वाज नथिंग अदर देन आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया. और ये आत्मनिर्भर भारत तभी संभव होगा जब हमारे यहाँ युवाओं की संख्या को हम सही दिशा में उनको डेवलप कर सके, और एक एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम एनकरेज करेंगे तो मुझे लगता है कि एज वी आर सीइंग द रिजल्ट since last 2 years on Atmanirbhar Bharat, there are many frontier areas where now India has become quite Atmanirbhar, and we are reducing our dependence on the other sectors, other economies, other countries, and this is taking big leap. And we have seen number of startup are happening every day. Billionaire groups, we are seeing young people are entering into this. लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें, जहां तक हम एडवोकेसी करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट के ऊपर, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, दैट इंक्लूड्स यूनिवर्सिटीज आल्सो, आई एम रेफरिंग हियर. अगर एक छोटा सा स्नैपशॉट अगर मैं आपके सामने रखूं कि पिछले 25 सालों में एंटरप्रेन्योरियल इन हायर एजुकेशन के ऊपर कितने रिसर्च आर्टिकल, कितने रिसर्च पब्लिकेशन हुए, ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको टिल सितंबर 2020 का है, और आप देखेंगे कि इट इज क्वाइट लो. तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है कि दैट वी हैव टू रियली लुक एट दिस. एक और मैं आपके सामने टेबल दिखाना चाह रहा हूँ कि रिसर्च आउटपुट ऑन एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट इन हायर एजुकेशन, यू सी वी स्टैंड फ्रॉम बॉटम एट नंबर 3. हमसे और भी जो है वो है साउथ अफ्रीका और तुर्की, and USA stands number 1, UK stands number 2, Italy stands number 3, Germany stands 3, Spain number 5, and followed by the other developing countries. So a country like us, jahan 1.39 billion people are there. I repeat, 1.39 billion, almost 1.4 billion people are there, and you see we stand on number 3 as far as research outputs are concerned. तो मुझे लगता है कि आज की जो संदर्भ में हमारी परिचर्चा है आज के एंटरप्रेन्योरियल डे के ऊपर, आई थिंक दिस इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस कि आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी हैव टू रियली इन्वेस्ट ऑन दिस. और इसीलिए मुझे लगता है कि जब नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात करते हैं, इट स्ट्रांगली एडवोकेटेड अबाउट इंक्यूबेशन सेंटर्स. मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत आईआईटी में हुई थी सबसे पहले, फॉलोड बाय एनआईटी में हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और आज धीरे धीरे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करने की आशा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर. तो आप देखेंगे कि पॉलिसी के तहत इंक्यूबेशन सेंटर सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सेटअप किए जाएंगे. वो अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, बट आइडियली ये होगा कि दे कैन वर्क in partnership with industries in setting up the incubation centers. ये जो फोटोग्राफ मैं आपके सामने नीचे दिखा रहा हूँ, it is a live photograph
of a real incubation center in one of the institutions in India. मैं यहाँ थोड़ा सा एक दो बातें बोलना चाहूंगा। इंक्यूबेशन सेंटर का पर्पस क्या है? बेसिकली टू प्रमोट द स्टार्टअप, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टूडेंट्स। इस इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी फैकल्टीज यहाँ पर उपस्थित होंगी, जो गाइड करेगी, मेंटर करेगी, उनका रोल ये रहेगा टू एजुकेट द स्टूडेंट अबाउट एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर हाउ टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट, how to identify business opportunities, how to prepare project proposal, how to approach financial institutions, including banks, funding agencies, how to approach that. Once you submit the proposal or, your project and all that, how to do follow-up and all that. Once you receive the, funding for this particular project or program, whatever you are going to take up, then how to launch your startup, how to start your enterprise. Again, this incubation center is going to play a very, very important and a very important vital role. Once you launch your enterprise or you make your startup, I'm sure there will be many challenges our young students are going to encounter. Young entrepreneurs, rather, I would say, they are going to encounter. So this incubation center has a multi-purpose role they have to do. They have to provide guidance, they have to do mentoring, they have to do coaching, to help them. It's like a hand holding, I repeat. इसका पर्पस क्या होगा? एक हैंड होल्डिंग की तरह हमको विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाना होगा और कैसे स्मूथली वो एंटरप्रेन्योरशिप को, अपना एंटरप्राइज को जो है बहुत आसानी से लॉन्च कर सके, और उसको हर स्टेज पर कहाँ पर भी डिफिकल्टी आएगी तो ये इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर जो है गाइडेंस और मेंटरिंग का सपोर्ट उपलब्ध होगा। तो मुझे आप सभी से आग्रह करूंगा मैं कि हमारी जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार है, इस दिशा में कार्य करे, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे युवाओं की प्रतिभा, बिहार के युवाओं की प्रतिभा को अगर हम ध्यान रखेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए, वहाँ की कॉन्टेक्स्ट को ध्यान देते हुए, लोकल नीड को, लोकल डिमांड को आइडेंटिफाई करते, लोकल परिपेक्ष में अगर हम इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स का निर्माण करेंगे, तो मुझे लगता है आज की परिचर्चा सार्थक होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे सामने इस वक्त 2 पॉलिसी फ्रेमवर्क है। एक पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो 2 साल पहले हमारे सामने उपलब्ध थी। इसके अलावा एक और पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी, जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 2015 में स्थापित की गई थी और इसमें मुख्यतः 2 मेजर कंपोनेंट, एक है स्किल डेवलपमेंट, जिसके ऊपर हम और विशेष चर्चा करेंगे, और साथ-साथ जो सेकंड कंपोनेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। पहले अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, स्किल डेवलपमेंट की बात करूं आपके सामने, आज अगर हम एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बात करेंगे, ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है ना बहुत तेजी से बदल रहा है। और आज देखेंगे आप कि 80% ऑफ ऑक्यूपेशन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 80% ऑफ द ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ स्किल्स। जहां तक हम स्किल की बात करते हैं, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमको स्किल की परिभाषा भी बदलनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, आईओटी, ये जो हम बातें करते हैं, यहाँ पर एक स्किल की जो डेफिनेशन है एंटायरली डिफरेंट। यहाँ कॉग्निटिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो केवल हम लोग साइकोमोटर स्किल्स की बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमको कॉग्निटिव स्किल्स की भी बात करनी चाहिए जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट की। आज देखेंगे आप कोडिंग के ऊपर काफी सारे चेंजेस और कई सारे नए चॉइसेस और नई सारे फील्ड हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। तो आप देखेंगे हर ऑक्यूपेशन में कहीं न कहीं स्किल की आवश्यकता हो। तो मुझे लगता है कि स्किल को हम कैसे प्रमोट करें, कैसे प्रभावी तरीके से कर सके, इसके ऊपर ध्यान देने की। और दूसरा जो हमने आज बात की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के वेबसाइट पर जाइए और आपको ये पॉलिसी विस्तृत रूप से उपलब्ध होगी और आप देखेंगे दोनों कंपोनेंट में किस तरह से भारत सरकार इन दोनों कंपोनेंट को प्रमोट करती है।
क्योंकि आज हमारा विषय एंटरप्रेन्योरशिप का था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो इस पॉलिसी के तहत जो है ना, द पॉलिसी एडवोकेट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी शुड हैव। आई रिपीट, promote entrepreneurial culture through advocacy and integration as a part of formal skill education। तो मैं चाहूंगा कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य करे। अगर हम वाकई एंटरप्रेन्योरियल कल्चर अगर हमारे यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में अगर प्रमोट करेंगे, तो आई एम वेरी होपफुल दैट ऑल टुडेज डिस्कशन डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प many our young minds who are studying in your universities and are affiliated in university institutions and organizations and all that. Policy says to enhance support for entrepreneurs in terms of credit, market linkages and social enterprise। आपने ये भी सुना होगा कि भारत सरकार हमेशा कह रही कि वी आर इम्प्रूविंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक सिंगल विंडो में आपका लाइसेंसिंग, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका लॉन्चिंग, एवरीथिंग विल हैपन। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भारत सरकार का विशेष आग्रह है और इस दिशा में काफी सारे काम हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि he suggests the ways to further and promote or boost entrepreneurship, particularly women, including socially, geographically marginalized and disadvantaged groups। तो यहाँ पर एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूसिविटी, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप केवल अर्बन एरियाज के लिए नहीं, हर हर वो व्यक्ति के लिए जिसमें पोटेंशियल है, और इसीलिए विमेन, socially, geographically marginalized, disadvantaged groups are also being taken into account by the policies and all that। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए विशेष प्रयास, विशेष स्कीम्स लॉन्च की गई। जैसे हम अक्सर सुनते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, स्टार्टअप इंडिया, और आए दिन आप देख रहे होंगे नए नए हमारे युवा इस दिशा में कदम रख रहे हैं। हर स्टेट में इसके बारे में कई सारे अच्छे प्रयास और कार्यक्रम हो रहे हैं। मेक इन इंडिया जो बहुत मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट इज आल्सो फॉर प्रमोटिंग इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अटल इनोवेशन मिशन, आई एम श्योर हमने अटल टिंकरिंग लैब तो सुनी है, तो ये उसी का ही एक डायरेक्शन है जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, प्रमोटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट फॉर द पीपल एंड फॉर द यूथ। इसके अलावा विमेन के लिए एक अलग प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है, दैट इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन एंड इट इज नोन एज स्टेप। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ये अलग से बनाई गई, ओनली फॉर बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा लास्टली ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, खासतौर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस में या इस फील्ड में काम करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके लिए भी भारत सरकार इस तरह के प्रोविजंस वगैरह की है। तो आप देखेंगे कि हमने आज अभी तक मैंने आपको दो पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। एक थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और साथ साथ मैंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के बारे में बात की। समरी में अगर हम देखें, अभी तक मैंने जो आपसे बात की कि ये पॉलिसी जो है ना, एजुकेशन टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट how to think critically, how to solve problem, how to be creative, how to be multidisciplinary, how to innovate, how to adapt, how to absorb new material in the novel and in the changing field। ये मेजर थ्रस्ट है। जब हमारा मेजर थ्रस्ट इतनी सारी इंपॉर्टेंट एरियाज पे होगा, तो क्योंकि हमारे आज की चर्चा में कई सारे शिक्षक वर्ग भी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमको हमारी पेडागोजी को बदलना होगा, जो क्लासरूम टीचिंग है उसको बदलना होगा। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट वी हैव टू ब्रिंग अ न्यू पेडागोजी इनटू द क्लासरूम, इनटू द टीचिंग लर्निंग रादर, आई वुड से। मतलब हमको मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तरफ काम करना। मुझे लगता है इसी आशा में हमारे डीन सर डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने भी इनडायरेक्टली इसके ऊपर चर्चा अपनी बात कही थी। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हमें काम करना होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड या यूथ, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग, ये हमारे लिए करना होगा। डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड, नॉट लेक्चर बेस्ड, दैट हैज टू बी देयर
and more importantly, we need to also have a flexible pattern of offering the programs. So thus you will see that, instigating a sense of problem solving, an attitude of innovation in the children instead of indulging the herd mentality has to be changed. So there are many innovation that I think we all need to think about it, how we can bring all these changes into our classroom, into our teaching learning approaches. Then only this advocacy for promoting innovation, promoting advocacy for entrepreneurship will be really realized into this. भारत सरकार ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने रखी थी, तो हमारा जो शिक्षा मंत्रालय, पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, अब जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके द्वारा एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की गई इमीडिएटली, और उसका एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, जिसका डॉक्यूमेंट का नाम है क्वेस्ट। आप देखेंगे भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय, उसके वेबसाइट पर ये किताब आपको मिल जाएगी, और इसमें वो सब बातें लिखी गई हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हर वो रिकमेंडेशन इसको एनालाइज किया गया है। उस रिकमेंडेशन को रियलाइज करने के लिए क्या-क्या स्पेसिफिक एक्शन एजेंडा हमें लेना होगा, क्या-क्या एक्शन स्टेप्स हमें लेने होंगे। इन एक्शन स्टेप्स के लिए संबंधित कौन-कौन से विभाग हैं, कौन-कौन सी एजेंसीज है, कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ जुड़ेंगे, और उनकी टाइमलाइन। इसमें पूरा एक्शन प्लान के साथ ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार किया गया है। मैं इसलिए आपको ये सब बातें बताना चाहूँगा कि भारत सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत वचनबद्ध है और बहुत सीरियस तौर पे इसके ऊपर काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल में हम विस्तृत तौर पर परिवर्तन हमारे शिक्षा प्रणाली में हम देखने जा रहे हैं। अब जो लास्ट मेरा सेगमेंट है, जहाँ पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि स्ट्रेंथनिंग इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप को हमने क्या किया? हमने कैसे ग्राउंड लेवल पर इसके ऊपर काम किया? इसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ अपने अनुभव भी रखना चाहूँगा, और क्या इनोवेशंस हमने लाए? कैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है? इसके ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए मैं फोकस करूँगा कि जहाँ मैं काम करता था पिछले 5 सालों से, वो ये एक इंस्टीट्यूशन का फ्रंट फोटोग्राफ है। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है पीएसएस, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसको पैसू कहा जाता है। ये भोपाल में स्थापित है, और ये 1993 में इसका निर्माण एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और एनसीईआरटी सब आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की एक इकाई है, और पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एकमात्र संस्था है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक शिक्षा, खास तौर से स्कूल एजुकेशन के लिए एकमात्र संस्था है जो विस्तृत रूप पे इस पर काम करती है। और ये यूनिवॉक का, यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवॉक एक इंटरनेशनल सेंटर है, जिसको टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, उसके ऊपर विशेष तौर पे काम किया जाता है। और ये एक अग्रिम संस्थान है एक यूनिवॉक नेटवर्क का। पिछले कई दशकों से, लगभग 3 दशकों से ये संस्था काम कर रही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति काफ़ी सारी बातें कही है, और इसमें एक आग्रह किया गया है कि 12वीं पंचवार्षिक योजना के तहत ये पाया गया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा डेनमार्क जैसे देश में 50% लोक संख्या को फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया है। वहीं अमेरिका में 52% आबादी जो है व्यावसायिक शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है। जर्मनी में 75%, साउथ कोरिया में तो 96% जनसंख्या जो है युवाओं की, उनको व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए 1.4 बिलियन कंट्री में केवल 5% हमारी लोक संख्या जो है व्यावसायिक शिक्षा के साथ। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमें बहुत कुछ व्यावसायिक शिक्षा के लिए काम करना है। और इसी दिशा में हमारी जो शिक्षा पॉलिसी है, ये कहती है कि बाय 2025, आज 2022 में हम लोग अगले 3 सालों के अंदर एटलीस्ट 50% लर्नर्स को स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन सिस्टम को व्यावसायिक शिक्षा के साथ एक्सपोजर करने की आवश्यकता है।
मेरे ख्याल से इसी दिशा में मैडम डे ने भी अपनी उद्बोधन में कहा था कि कैसे वो अलग-अलग माध्यमों से विद्यार्थियों को अलग-अलग दिशा में, अलग-अलग सेक्टर्स में एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के संबंधित विद्यार्थियों को नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अभी ये जो नई शिक्षा व्यवस्था है हमारे सामने, उसके तहत जो है आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में व्यावसायिक शिक्षा के बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, खास तौर से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए। अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो है 26.3 एज़ पर डेटा 2018 और उसको 50% तक 2035 तक जो है हमको लाने का लक्ष्य रखा। तो आप देखेंगे कि सभी संस्थान, स्कूलों से लेकर हायर एजुकेशन के सभी संस्थानों में किसी न किसी रूप में व्यावसायिक शिक्षा के साथ बच्चों को हमको जोड़ना होगा, नए-नए कोर्सेज़ को उनके लिए उपलब्ध कराना होगा। और इसी दिशा में जो है ना, हाउ टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, व्यावसायिक शिक्षा को इंटीग्रेट किया जाएगा, स्कूली शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आप देखेंगे इन अ फेज मैनर स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा और ये एक रास्ता बनाएगा, एक फाउंडेशन बनाएगा हमारे आत्मनिर्भर होने के लिए, हमारे युवाओं में कौशल उपलब्ध कराने के लिए, साथ-साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारा ये काम। इसकी शुरुआत कैसे होगी? जब हमको 50% युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कक्षा 6 से लेके 8वीं के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोज़र दिया जाएगा, जिसका नाम कहा जाएगा प्री वोकेशनल एजुकेशन। तो आप देखेंगे कक्षा 6 से 8वीं के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। इस व्यावसायिक शिक्षा का जो स्वरूप रहेगा, उसके ऊपर हमारी संस्था ने एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट भी बनाया है। And the whole purpose of this entire, introducing pre-vocational education, basically to make student aware what are the different occupations in the world of work, what people really do for living, what kind of skills are required for different occupations, and how they can develop those skills. What kind of vocation becomes their, aspirations. That has to be connected. और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि करीब 10 बैगलेस डेज का प्रोविजन किया गया है इसमें। तो 10 दिन हर कक्षा में 6, 7वीं और 8वीं में विद्यार्थियों को 10 दिन के लिए बैगलेस के साथ अलग-अलग फील्ड में, अलग-अलग एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा। इसका पर्पज़ ही यही है। उसमें आर्टिसन हो सकते हैं, क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, अ, आर्टिस्ट हो सकते हैं, वोकल म्यूजिक वाले हो सकते हैं, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द लोकल इन व्हिच दिस कैन बी अवेलेबल। तो इसके माध्यम से बच्चों को ये सब चीज़ें बताई जाए। आप ये भी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में व्यावसायिक शिक्षा को अभी भी वो दर्जा नहीं दिया जाता और ये जो माइंडसेट हमको बदलना है, इसके लिए ये जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है, प्री वोकेशनल एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आई रिपीट, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। कैसे? जब हमारे यंग युवा जब हम अलग-अलग फील्ड में उनको एक्सपोज़ करेंगे, अलग-अलग लोगों के साथ जोड़ेंगे और वो जब देखेंगे कि पीपल व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, what people really do for living, what kind of skill sets are required. And when they will share these experiences with their parents, the parent will understand the value of the skill in the life. और स्लोली आप देखेंगे कि अगले 2-3 सालों में हमारी जो भूमिका थी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति, वोकेशनल एजुकेशन के प्रति, आई एम वेरी होपफुल दैट इज़ गोइंग टू चेंज इन अ बिग वे। तो कक्षा 6 से 8वीं तक प्री वोकेशनल एजुकेशन आएगा। 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगा। तो स्टूडेंट अलोंग विद देयर रेगुलर स्टडीज कैन चूज वन इलेक्टिव एज अ वोकेशनल एजुकेशन और 9वीं 10वीं के लिए एक जॉब रोल रहेगा और 11वीं 12वीं के लिए एक अनदर जॉब रोल। अलग सेक्टर भी हो सकता है, अलग वोकेशन भी हो सकता है और उसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी स्टडीज कर और इसी दशा में, इसी सेक्टर में या इसी जॉब रोल को आगे चलकर 12वीं के बाद भी हायर एजुकेशन में स्टूडेंट कैन टेक वोकेशनल एजुकेशन, दे कैन कंटिन्यू अप टू पीएचडी। तो ये संभव हो रहा है बिकॉज़ ऑफ आवर न्यू नेशनल।
इन सब चीजों को लाने के लिए इसके ऊपर आप सब लोग ध्यान दीजिए अभी। इसको करने के लिए एक अच्छे तरीके से क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्किल लैबोरेटरीज का स्थापना की जाए। तो आप देखेंगे हब और स्पोक मॉडल, जैसे हमारा एक साइकिल का टायर का एक चक्का होता है, जैसे एक बीच में हब है और एक स्पोक के माध्यम से हमारा टायर उसके साथ जुड़ा रहता है। उसी तरह से सेंट्रल लोकेशन के ऊपर इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में स्किल लैबोरेटरी निर्माण की और आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे और इस लैबोरेटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को उसमें व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए इन लैब्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दिस पॉलिसी आल्सो टॉक अबाउट कोलैबोरेशन। So academic institutions with vocational institutions are going to collaborate with ITI, polytechnic, local businesses, industries, hospitals, farms, NGOs. न जाने कितने विकल्प हैं जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करेगी, कोलैबोरेट करेगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि द इंस्टीट्यूशंस विल हैव लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज अवेलेबल लोकली कैन बी टैप्ड। तो इस माध्यम से आप विद्यार्थियों को लोकल इंडस्ट्री विजिट के लिए जा सकते हैं। लोकल एक्सपर्ट को टैप करके यू कैन ब्रिंग देम एज एन एक्सपर्ट इनटू योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डिलीवरिंग द टॉक, connecting with the student. They can have expert lecture with them. It will open up internship opportunity, hands-on practice training, apprenticeship training. Everything is going to open up because of this collaboration. So I think every institution should work towards collaboration. और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस एरिया। व्यावसायिक शिक्षा ऐसे ही ऑफर नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप वही होना चाहिए, डिमांड ड्रिवन वोकेशनल एजुकेशन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकल डिमांड क्या है, किस तरह की इंडस्ट्रीज है, किस तरह की मैन पावर की आने वाले सालों में आवश्यकता है और उसको ध्यान में रखते हुए हमको वोकेशनल कोर्सेज को डिजाइन करना होगा, वोकेशनल करिकुलम बनाना होगा, वोकेशनल कोर्सेज को विद्यार्थियों तक पहुंचाना होगा। So these are all going to be a demand driven quality vocational education will be there. तो इस दिशा में जब हमारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी आई थी, तो उसी समय पे हमारे भारत सरकार ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया। एक गैजेट नोटिफिकेशन के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया है और आप देखेंगे दिस इज द एंटायर आर्किटेक्ट ऑफ आवर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और ये जो लेफ्ट में आप एक छोटा सा गोला दिखाई दे रहा है जहां लिखा गया है कि हायर सेकेंडरी स्कूल दैट इज क्लासेस 9 to 12, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का मेजर। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एंटायर फ्रेमवर्क, जो फाउंडेशन है हमारे स्किल मैन पावर के लिए जो तैयार करना है, उसकी शुरुआत हमारे इंस्टीट्यूशन से होती है एंड दैट इज हाउ वी हैव बिल्ट द वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा का स्कूली में इंट्रोड्यूस करने का जो प्रयास था, इसका पर्पस था स्किल इंडिया मिशन के तहत। तो आई विल ब्रिंग अगेन बैक टू यू। हमने कहा था कि एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2015 भारत सरकार ने निर्देशित की गई और ये जो स्किल इंडिया मिशन था हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि हर वो मंत्रालय, हर वो ऑर्गेनाइजेशंस को स्किल इंडिया मिशन के साथ हमको जुड़ना होगा। तो हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वोकेशनल कोर्सेज इनटू स्कूल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन इन इंडिया। तो जब हमने व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा में सम्मिलित किया गया, तो हमने जब इसको स्टडी किया, देन आई इंट्रोड्यूस टू मेजर कंपोनेंट अंडर स्कूल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल। तो देयर आर टू कंपोनेंट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज वन कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट है जॉब स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट। तो इसके तहत हमने पूरा आर्किटेक्ट चेंज किया है और आप देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आप देखेंगे ऊपर की स्लाइड में लिखा है इसमें कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 200 घंटे के व्यावसायिक शिक्षा के कोर्सेस होंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 300 घंटे के व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स होंगे। तो इन 200 घंटों से या 300 घंटों में से 37% ऑफ द टाइम
has been allocated for employability skills, and remaining 63% of the time is allocated for the vocational skills. जहां तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात है, आई थिंक यू ऑल नो कि ओनली स्किल होने से काम नहीं चलेगा। तो अगर हमको विद्यार्थियों की एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करना है, तो आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑन द। तो वी हैव स्टडीड मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आईएलओ ने क्या किया है, यूनेस्को ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, ये सभी का हमने अध्ययन किया और हमने ये देखा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्या परिभाषा होगी, क्या एम्प्लॉयबिलिटी शुड बी प्रायोरिटी इन इंडिया, that has all been identified by us, and we have identified 5 major components. So first is communication skill. I think you all know Indian student lack some communication skill in a big way. तो संप्रेषण की जो स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिजिटल युग में हैं, तो डिजिटल स्किल्स जिसको हम कहते हैं आईसीटी स्किल हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर एवरी यंग स्टूडेंट। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, creativity, innovativeness, so many skills are there. Empathy, sympathy, team building, all are nothing but related to self management. The fourth one is entrepreneurial skill. I think जो हम आज बात कर रहे हैं, and you'll be very happy to know कि हमने entrepreneurial skills starting from class 9 to 12 has already been introduced as a part of vocational education in India. And lastly, we have also added green skills. डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने कहा था कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के लिए एक उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भारत उसका एक सिग्नेचरी है आउट ऑफ सो मेनी कंट्रीज, और इस दिशा को अगर हमको अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन ऑक्यूपेशंस की अनिवार्यता इसमें बताने की अलग से जरूरत नहीं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वी हैव आल्सो इंक्लूडेड ग्रीन स्किल्स एज अ पार्ट ऑफ under the employability skills, and then vocational skills, sector specific skills has all been added. यहाँ मैं छोटे से कुछ टेबल्स आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि कक्षा 9वीं के लिए हमने ये छोटा सा लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है, एंड यू कैन सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, different characteristics of entrepreneurs, theory aspect, practical aspect for class 9 or grade 9 has already been there. Then we have seen, for grade 10, तो आपने जैसे ये देखा, ये grade 10 के लिए है, various characteristics of entrepreneurs, again theory, practical, number of hours, all has been added here. Then for class 11, आपने देखा इसमें ये सभी entrepreneurial skills, significance of entrepreneurial values, attitudinal change which is required to become an entrepreneur. Everything has been worked out very systematically under this tables and all that. और जैसा ये लास्ट है क्लास 12 के लिए, तो इसके भी लिए आप करिकुलम देख सकते हैं। इन लर्निंग आउटकम फॉर्म, थियरी, प्रैक्टिकल, ऑल हैज बीन एडेड। हेलो, कैन आई गो अहेड? Yes, Professor. Yes, please. Yes, sir. ओके, तो आप देखिए हमने विस्तृत रूप से एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को ऑलरेडी कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे हमने स्ट्रक्चर किया। आपने ये भी देखा होगा कि कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम बढ़ाते गए। उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम क्लास 9 to 12 के लिए हमने स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट किया है। उसी तरह से डिजिटल स्किल्स, ICT skills, self-management skill, even green skill have also been structured in a very structurally hierarchical way and all that. So this has already been done. तो वर्तमान में जो है ना, ये जो संस्था थी मेरी, हम लोग 17 सेक्टर्स में काम करते थे। जैसे आप देखेंगे these are all prime sectors of Indian economy, और इन्हीं सेक्टर्स में हमने 152 जॉब रोल के ऊपर काम, और ये सभी 17 सेक्टर्स और 152 जॉब रोल के लिए लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम बनाए गए। और ये करिकुलम जो बनाया गया है, दीज आर ऑल एज पर द लेबर मार्केट, एज पर द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड के माध्यम से हमने करिकुलम को बनाया गया है। और ये जो विद्यार्थी है जो कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद इन वोकेशनल कोर्सेज को कंप्लीट करते हैं, दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। So this is very interesting.
that students are getting benefit of this vocational education. हमने पहली बार सेक्टर स्किल काउंसिल्स को, इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट को इसके साथ इंटीग्रेट किया, उनसे वैलिडेट किया गया, ये करिकुलम वैलिडेट किया गया, किताबें वैलिडेट कराई, यू नो, theory, practical, everything has been validated, reviewed by the experts, और एक स्टैंडर्ड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम का निर्माण किया गया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब विद्यार्थी 10वीं में पास होगा बोर्ड के माध्यम से या 12वीं में पास होगा, तो every student is going to get 2 certificates. One is board's qualification certificate, class 10 or class 12. Along with this, the student are also going to get one more certificate, that is for vocational education courses. And this certificate will be issued by National Skill Development Corporation. तो जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, जैसे एग्रीकल्चर की सेक्टर स्किल काउंसिल है, या जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग की सेक्टर स्किल काउंसिल है, या लॉजिस्टिक की फूड सेक्टर काउंसिल है, इनके सर्टिफाइड एसेसर, सर्टिफाइड इवैल्यूएटर द्वारा विद्यार्थियों को जांचा परखा जाएगा against the national occupation standard, and accordingly the student will be getting the another certificate of certification of vocational education courses. Friends, you'll be very happy to know कि आज के तारीख में लगभग 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन हो रहा है। 13,000 से ज्यादा स्कूल्स भारतवर्ष में हम लोग व्यावसायिक शिक्षा का ऑफर कर रहे हैं। You know, we started with 40 schools in Haryana. I repeat, only 40 schools in Haryana, and today we have 13,000 plus schools offering vocational courses in 17 sectors, around 152 job roles. और लगभग 1.3 million students are taking the benefit of vocational courses. मुझे मालूम है कि ये नंबर्स आपको लगता होगा काफी स्मॉल है, बट यू नो इन द नेक्स्ट 2 to 3 years down the line you are going to see these numbers are going to be double, triple, you know, multiple fold. It is going to happen as we are going to enhance the target of vocational education in India. So you will see now that these are 3 visuals. We are seeing that, you know, there is one learning outcome based vocational curriculum. We have a dedicated textbook on employability skill, as I mentioned to you. And the last part is the vocational specific book, that is, as you can see here, for class 9. So like this, you know, हमने एक पैकेज बनाया, एक करिकुलम, एम्प्लॉयबिलिटी का किताब, और साथ साथ जो भी सेक्टर स्पेसिफिक किताबें होंगी, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक किताबें होगी, ये सब किताबें। ये वेबसाइट है हमारी संस्थान की। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइएगा और आपको ये सभी किताबें यू कैन इन अ पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड। इसके अलावा यू नो एक मोबाइल ऐप भी है एनसीईआरटी का, जिसको हम कहते हैं ई पाठशाला। तो आपके मोबाइल पर, आपके पीसी पर, यू नो, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से सभी ये सामग्री जो हमने डिजिटल फॉर्म में तैयार की है, ये सभी आपके विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध। तो आप देखेंगे कि लगभग 60 किताबें एनसीईआरटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संबंधित पब्लिश की गई। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में लगभग इतनी ही किताबें और हमारे सामने व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपलब्ध होगी और जो है और बच्चों को इसका लाभ होगा। पिछले 4 सालों से, मतलब लगभग 2018 से जो है, हमने इन कामों के साथ साथ डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी काफी काम किया और इसकी अच्छी शुरुआत ये हुई कि जब हमारे यहाँ कोरोना की वजह से जब स्कूल्स बंद थे, व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक नहीं थे हमारे सामने, मतलब क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो ये डिजिटल रिसोर्सेस ही थे जो इनके माध्यम से हमने विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा का लाभ देने की कोशिश की। हमारा एक डेडिकेटेड PSSCIV यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पे जाइए और आपको कई सारे वीडियोस इसमें आपको दिखाई देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्री वोकेशनल की गाइडलाइंस भी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्री वोकेशनल जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शिक्षकों को कैसे गाइडेंस मिल सकता है टू ऑर्गेनाइज द लर्निंग एक्टिविटीज, उसके लिए लगभग 50 फिल्में हमने बनाई। यूनिट वाइज, यू नो, टॉपिक वाइज हमने पीपीटीज, पॉडकास्ट भी बनाए हैं। लगभग 200 से ज्यादा हमने वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट किए थे, जो क्लासरूम बेस्ड लेक्चर्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, रियल फील्ड के एक्शन ओरिएंटेड वीडियोस हो सकते हैं, where transfer of skills are taking. So all such videos are also being created
और ये लगातार काम चल रहा है। इस संस्था द्वारा लगातार इस पे काम हो रहा है और ये काफ़ी सारा हमने एक तरफ व्यावसायिक शिक्षा के करिकुलम को बनाया, किताबों को बनाया, डिजिटल वीडियोज़ वगैरह सामग्री का निर्माण किया। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स की बड़ी आवश्यकता है और इसी के स्वरूप हमने जो है ना, एक डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया जो 1 ईयर का डिप्लोमा है, उसको कहा जाता है डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी द्वारा इस डिप्लोमा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस साल चौथी बैच इस डिप्लोमा प्रोग्राम की चल रही है और वर्तमान में ये जो डिप्लोमा है, ये 1 साल का है, वो है डिस्टेंस कम कॉन्टैक्ट मोड। आई रिपीट, डिस्टेंस कम कॉन्टैक्ट मोड में इस डिप्लोमा प्रोग्राम का संचालन इस संस्था द्वारा किया जा रहा है एंड फॉर द लास्ट 4 इयर्स आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि 100% इसमें एडमिशंस हो रहे हैं एंड पीपल आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस वोकेशनल कोर्सेज अक्रॉस इंडिया। टीचर्स के निर्माण के साथ-साथ हमने टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दिया और इसीलिए हमने स्पेशली वोकेशनल लैबोरेटरीज़ का निर्माण किया हमारे संस्थान में, खास तौर से जैसे शुरू में 5 लैबोरेटरीज़ हमने निर्माण की है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए, होम साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, हेल्थ साइंस के लिए हमने अलग-अलग लैब्स का निर्माण किया। इसके अलावा अलग-अलग लेवल पर हमने व्यावसायिक शिक्षा का संचालन के लिए ट्रेनिंग भी की। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया की फंक्शनरीज के लिए, हेड्स ऑफ स्कूल्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, डायरेक्टर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्कूल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा के परिभाषा क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको कैसे वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन का इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आगाह किया। इसके अलावा हमने वोकेशनल पेडागॉजी के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल टीचर्स के ऊपर प्रोग्राम किया ऑनलाइन, ऑफलाइन में, अभी तो ऑफलाइन में है, बट वी हैव कंडक्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन फॉर इक्विपिंग टीचर्स विद वोकेशनल पेडागॉजी। इसके अलावा कंटेंट अपडेटिंग प्रोग्राम अपने-अपने फील्ड में जैसे रिटेल है, लॉजिस्टिक है, आईटी इनेबल सर्विस है, अपैरल है, फूड प्रोसेसिंग है, सो मेनी सेक्टर्स आते हैं, तो उनके एरिया में भी हमने अपस्किलिंग ऑफ टीचर्स के लिए प्रोग्राम किया। ऑनगोइंग रिसर्च स्टडीज हमने अपकमिंग फील्ड में इसके माध्यम से की गई। आखिरी में मैं आपके सामने कहूँगा कि ये तो सारे ऐसे लगातार हमको आने वाले साल जैसे हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष आग्रह किया गया है। तो अगर हमको आगे इसको एक्सपांड करना है, तो our strategic priority for vocational education and training will be how we can strengthen further. How can we further expand vocational education in school? इसके ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है। We have already developed the draft guideline for pre-vocational education. We have developed 50 videos for pre-vocational education. So as I told you, कि pre-vocational education is going to be a game changer in Indian society for promoting vocational education for classes 6 to 8. तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. We are connecting with the states for implementing this particular guidelines and the advocacy of national education policy. इसके अलावा I am very happy to tell you कि we have also taken a special project funded by Ministry of Education on creating model innovative vocational education and training schools in India. So there are 10 model vocational schools will be set up in India और उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है. 100 virtual labs and digital resources for vocational courses will be there. तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेशंस के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स बनाते हैं और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री मैडम ने हमारे जो बजट एलोकेशंस होता है उसमें स्पेशली बजट अनाउंसमेंट किया है ओनली फॉर ब्रिंगिंग वर्चुअल लैबोरेटरीज इन वोकेशनल एजुकेशन. So this year around 100 virtual laboratories will be created and it will be available on a special dedicated platform. हमारा ये जितना भी digitalization of content है, that is also available on Diksha portal, a dedicated portal, separate vertical only for vocational education. That also we have done. Vocational education is a dynamic field and it is always evolving field, and that's why we are adding another new sectors, new job role in our kitty. So now from 152
another 25 new job role will be added into vocational education this year, and the institution will be developing the new curriculum for new job roles. उसमें कई सारे नए areas हैं, and most importantly, we are also going to launch a Nishta program for preparing vocational teachers. So it will be an online program exclusively for vocational education in India, and I'm sure it will be coming in a very big way. Whatever work we have done, I'm extremely happy to tell you. It's a teamwork, it's a team effort, and it gives me very pleasure sharing with you that I was awarded the Green Skill Award 2021 by the European Training Foundation for introducing green skills as a part of vocationalization of school education. I think you can see the photograph, you can see the trophy which was awarded by the European Training Foundation Italy in the last year, that is 2021. I also received the Innovative Trainers Award by the Indian Society for Training and Development for bringing innovations in the teachers' capacity building, even during the COVID time. And these all recognition are the testimony to the fact that there is a lot of things to be done, and these are all our small efforts that we are trying to do through this uh, effort. So I will just stop here the presentation and come back to online mode. Uh, Last one or two points I would like to also add on to I talked to you about the school education. But currently, as many of you know, that I'm already working in the National Institute of Technical Teachers Training and Research. So I'm collaborating with the Commonwealth of Learning. And with Commonwealth of Learning, we are developing an exclusive, teaching excellence program for technical and vocational education. So it will be totally online program. It will be free, not only for India, but it will be also available across Commonwealth countries. And it will be online certificate program. And our team, I'm coordinating that particular program, and we are working very closely with Commonwealth of Learning. And I'm very hopeful that by next year, early next year, we'll be launching this online program to benefit. Because I believe, teacher has the most important responsibility if you really want to bring change on the ground. So I will stop for a while. I talked a lot. Let me have some questions, some reactions from our audience. I will also request Dr. Shivastav ji, Dr. Mukesh ji, if I missed out anything, feel very free to add on to the points if I missed anything. And the forum is open. Thank you once again, sir, for thinking about me and giving such a wonderful and big honor for me to be part of this celebration. Thank you. थैंक यू सो मच सर. इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो, डॉक्टर ओमकार, मैं आधा मिनट लूंगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, एक किताब पढ़ी थी जेल पंडित की, द वर्ल्ड ऑफ वर्क, तब प्रभावित हुआ था नई नई दुनिया को देख करके. और आज उसके बाद दूसरा आज दिन है आपका लेक्चर सुन के, जिसने इतने सारे एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं इस माध्यम से. सो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन एंड being with us. Now you can take question answer session ahead. Hello. Sir, Good evening, sir. I have one question. Yeah. I have one question, sir. First of all, thanks to all organizing committee for the giving this opportunity. सर हमें एक चीज सर, आपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतना अच्छा बताया है, सो वेरी वेरी थैंकफुल. एंड सर आई हैव ओनली वन क्वेश्चन सर. इन एजुकेशन पॉलिसी सर, जो 6 to 8 के बच्चे हैं सर, उनके लिए एक लैंग्वेज प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आ रही है इन प्रेजेंट टाइम, 6 to 8 के लड़कों के लिए सर, उनके लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्या रूल्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सर लैंग्वेज को सुधार सकती है सर. इन केस ऑफ रूरल एरियाज सर, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो प्रेजेंट टाइम पे बच्चों पे सबसे ज्यादा आ रही है, तो प्लीज सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा रघुवीर जी आपको. मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, बट थोड़ी सी अलग बात मैं आप सबके लिए बताना चाहूंगा. जी सर. देखिए, व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति हमने देखी, ठीक है. हमने ये देखा कि केवल 5%
युवा हैं जिनको व्यावसायिक शिक्षा के साथ हमने जोड़ा हुआ। दैट इज नंबर 1। साउथ कोरिया की हमने टारगेट देखा जहां 96% है, हम केवल 5। इसकी वजह भी हमको देखने की आवश्यकता है। Why it all happened? So one of the first reason was that our focus was only on dropouts. Dropout from class 8, dropout from class 10, dropout from class 11, class 12, everything. So we never gave aspirational vocational education. We thought that those who are not good in studies should go into vocational education. So that created a big mindset gap in our society. That has to be taken back. क्या करना चाहिए? तो हमने 2 चीजें इसमें लेकर आई हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हम कक्षा 6 से 8वीं के लिए लेके आए। दिस इज नंबर 1। बट इससे काम नहीं होगा। जैसे विद्यार्थी 8वीं में पास आउट होता है, at this particular time we are also coming up, already we have developed और उसका नाम है vocational interest inventory. I repeat, vocational interest inventory. It's a free diagnostic tool. I repeat, it's a free diagnostic tool. थोड़ा म्यूट करिए, कोई क्या ऑडियो मुझे इको कर रहा है। Raghuveer, could you mute yourself? Raghuveer, yeah. Yes, sir. आप Please proceed, sir. फिर Proceed. से ऑन कर लीजिएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम, इको हो रहा है। तो ये जो फ्री डायग्नोस्टिक टूल है ना, ये इसलिए दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, शिक्षकों को एक 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 साइंटिफिक तरीके से पता चल सकेगा कि व्हाट इज द student's interest, what are his hobbies, what are his liking, what are his disliking, and based on that which vocation will be much suitable, more apt for him. तो ये अगर एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम बच्चों को बताएंगे तो क्या होगा कि पेरेंट्स को भी हम गाइड कर पाएंगे, टीचर भी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकेंगे, एंड स्टूडेंट कैन चूज, he or she can choose the rightful vocation which becomes his profession in the years down the line. तो ये काम भी हमने किया हुआ है। ये तो हो गया कक्षा 8वीं के लिए, when student get into class 9 and 10. But as soon as the student goes into class 10, he becomes much more matured, more concerned. So he should have considered opinion for the vocation that he has to take in class 11 and 12. I repeat, कक्षा 11वीं और 12वीं में बच्चा काफी मैच्योर होता है, तो कंसिडर्ड ओपिनियन होना चाहिए हमारे डिसीजन के लिए कि विच फील्ड में मुझे जाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में जाना चाहिए। तो उसके लिए वी आर अगेन कमिंग अप विद अनदर टेस्ट दैट इज नोन एज स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आई रिपीट, स्किल बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके ऊपर काम हो रहा है एनसीईआरटी द्वारा, सीबीएसई द्वारा भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा, ऑनलाइन पर उपलब्ध होगा और बच्चे घर पे बैठकर आसानी से 30-40 मिनट्स के दौरान उनको पता लग जाएगा कि उनकी उनकी टेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट, उनका एस्पिरेशंस किस दिशा में है और उस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक नया काम हमने एलिमेंट ज्वाइन किया है। तो आप देखेंगे कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो मैं वहाँ आपको ध्यान देना चाहूँगा आप सभी का कि इकोसिस्टम बनाने के लिए कई सारी बातों की आवश्यकता है। हमने आपको दिखाया कि जब नेशनल पॉलिसी आ गई है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की, हमने बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो इसकी रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए हमने व्यावसायिक शिक्षा के करिकुलम को एक नए आर्किटेक्ट के साथ एम्प्लॉयबिलिटी के तहत एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जोड़ा गया। केवल हमने जोड़ने से काम नहीं किया, हमने करिकुलम बनाया, किताबें बनाई, टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया, उसकी डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम किया। स्टेट्स के पास अभी भी रिसोर्स पूल नहीं है, ट्रेन मैन पावर नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर इस स्कीम को हमको सस्टेन करना है तो हमने डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग और अभी यहाँ हम रुक नहीं रहे। We are still continuing our effort. Now we are designing curriculum for vocational courses to be introduced into higher education. I repeat, I am working on designing vocational education curriculum to be introduced as a part of higher education institution. तो आप देखेंगे कि एक एक सीक्वेंस है, एक दूसरे से कनेक्शन है और इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो एंटायर इकोसिस्टम हमारा काम करेगा। तो I request, I appeal to all of you, especially ऑनरेबल श्रीवास्तव सर के लीडरशिप में मैं चाहूंगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम करे कि कैसे हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के कोर्सेज
हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में एक चरणबद्ध तरीके से अगर हम लॉन्चिंग करेंगे तो ये जो एंटायर इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम करना होगा। इंक्यूबेशन सेंटर की हमने बात, तो मुझे लगता है कि हमको इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स को ओरिएंट करना पड़ेगा। दे हैव टू बी सेंसिटाइज्ड द रोल द इंक्यूबेशन सेंटर इज गोइंग टू क्रिएट। They have to invest infrastructure on creating the incubation centers, orientation of the teachers, orientation of the students who are going to be the taking up the incubation centers in a meaningful way. Local partnership के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. We have to guide institutions in signing MOU. I repeat, many principals don't know how to sign an MOU with the local partner, local industry, how to identify the areas of collaboration. I think these are all priorities, areas that we really need to work on it, and then only you can see a visible change on the ground. I'm sorry I took little more time, but I thought these are also equally important point that every one of us should look into this. I hope Raghuveer I answered. Thanks a lot. Yes, sir. Yes, sir. I'm satisfied, sir. Language तो ऐसी बात है कि sometime in India it becomes a political issue, it becomes regional issues and all that. But I am telling you, it doesn't matter whether it is a Hindi or your regional language or some other state language. It doesn't matter all that one. Important is that we give good emphasis on building the abilities which are required. Or any investment. मेरा तो एक firm belief है. Any amount of investment on developing communication skill. It doesn't matter which language platform you are using. It doesn't matter. But any amount of effort invested, any money invested on this is going to give you a big return, 10 times return on the aspect of communication skill. That's my firm belief. Okay. चलिए आगे और कुछ. I am fully satisfied, sir. Thank you for organizing committee. Thank you. आप आइए भोपाल, then it will be pleasure to talk to you more. Yeah, go ahead, please. Anyone else? Yes, Amit Kumar ji. हाँ अमित जी आवाज आ रही है आपकी. हाँ अमित जी आवाज आ रही है आपकी. प्लीज बोलिए. आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है. Omkar sir, kindly take the questions and present. Amit Kumar ji, आपकी voice clear नहीं है. Sir, I am taking questions which came from the online, sir. How do we create a balance between manpower planning and requirement of manpower for making self-reliant India? This is one question, sir, from one of the participants. And one more question we have, sir. What is the relationship between education and creating entrepreneurship ecosystem? And one more question we have, sir, from how do we get loans from micro, small, medium scale enterprises for startups or small businesses? These are three questions, sir, Professor. काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. सबसे पहले हमें एक सोचना चाहिए कि हर क्वेश्चन का एक स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं होगा. Am I right? You agree with all of you? Agree with me? There cannot be one straight jacket answer. Then I say this is the answer I have answered to you. Yes, Professor. Every state has unique requirement. Every state has unique priorities. That we have to understand. ये तो national policy की बात की मैंने. There are state policies also on promoting entrepreneurship. That we have to understand. तो जब हम बिहार की अगर हम बात करेंगे तो हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या प्रायोरिटीज तय की गई है, कौन से ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, ऐसे कौन से जिले आइडेंटिफाई किए. मैं जिले भी बोलूंगा. लोकल एरियाज दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज फर्दर फोकस एरियाज मैं कह सकता हूँ प्रमोशन के लिए ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कई बार ऐसे इंसेंटिव प्रोग्राम भी डिजाइन किए जाते हैं. जैसे पहले 3 साल या अगले 5 साल के लिए जो है ना, 0 इनकम टैक्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्पेस, free water, just to attract entrepreneurs to take up, taking and launching the ventures and all that one. So, agar ye until and unless you analyze this, until and unless you understand all these things, it cannot be, addressed. कई बार जो है ना राज्य सरकार द्वारा भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो कई ऐसे सारे कार्यक्रम जो है ना, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, 1 week program, 2 week program, 3 months program,
So all these programs are also part of long-term strategy by the state to attract young talent to go for entrepreneurship. जहां तक आपने कहा कि माइक्रो फाइनेंसिंग की जहां तक हम बात करते हैं, तो अगेन इट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि लोकल लेवल पर बैंक द्वारा क्या स्कीम्स को हमने लेकर आए। विमेन्स के लिए अलग है, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए अलग है, यू नो, वीकर कम्युनिटी के लिए अलग अलग स्कीम है। ये सभी को हमको अट्रैक्ट, तो ये जब तक हम नहीं करेंगे, इसके ऐसे स्टेट जैकेट आंसर्स हम नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, कि हम अपने अपने विभागों में या अपनी अपनी संस्थानों में या अपनी यूनिवर्सिटीज में, अगर हम छोटा सा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप अगर हम शुरू करते हैं, मे बी 1 day, मे बी 2 days, मे बी 1 week, doesn't matter. It all depends on how you start promoting entrepreneurship in the university. So if you can launch this particular program, इससे क्या फायदा होगा हमें? इससे फायदा ये होगा कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो स्कीम से राज्य सरकार द्वारा, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे सभी लोगों को अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं के साथ जोड़ेंगे, इवन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को अगर हम जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनमें एक अवेयरनेस होगा कि यहाँ ये इस तरह से हम लोग अपने आप को कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर आई एम टॉकिंग। जब सेकेंड ईयर आएगा या थर्ड ईयर आएगा, तो हमें ये करना होगा कि हम एक इंटेंसिव प्रोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लेते हैं। तो देखिए कई सारे रिसर्चेस इसमें देखी गई। अगर मैं एक संस्था का नाम लूं यहाँ पर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDI, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, अहमदाबाद में है, गुजरात में। और इस संस्थान द्वारा एक नेशनल सर्वे किया गया था, ये जानने के लिए कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में क्या वो ट्रेड्स होते, क्या क्वालिटीज होती है, दैट मेक्स देम यूनिक, दैट मेक्स देम एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसी 13 ट्रेड्स आइडेंटिफाई की गई हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में अक्रॉस इंडिया। तो हम उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग 2 हफ्ते के प्रोग्राम में उन ट्रेड्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं और विद्यार्थियों को स्टेजेस में, फेजेस में जो है, उन ट्रेड्स के माध्यम से एक वेल इक्विप किया जा सकता है। और उसी के माध्यम से हम लोग उनसे एक हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ टू स्टार्ट, यू नो, क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज, व्हाट आर द फॉर्म्स वगैरह उनको भरना होगा। ये सभी चीजें उस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है और इस माध्यम से हम लोग काफी बच्चों तक इस बारे में पहुंचाया जा सकता है। एक बात ये ना, बच्चों में सब कुछ है, लेकिन उनकी जिज्ञासा, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी कंसर्न्स को अगर हम इस प्रोग्राम में अगर एड्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि काफी सारे बच्चे इसके लिए प्रभावित होकर आगे जा सकते हैं। हमें ये भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। हम जब एंटरप्राइज की बात करते हैं, देखिए एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा मैं, कैन आई टेक श्रीवास्तव सर कपल ऑफ मिनट्स टू ऐड ऑन टू एवरीवनस बेनिफिट? यस देखिए प्रोफेसर, मैंने यस। टर्म्स यूज किए हैं। पहला है एंटरप्रेन्योर, आई रिपीट, फर्स्ट आई सेड एंटरप्रेन्योर, second word I am using is intrapreneur, intrapreneur, and the third word I am using is entrepreneurship. Entrepreneur is an individual जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। Intrapreneur is also entrepreneur, थोड़ा सा फर्क है। यहां सिर्फ फर्क ये है कि जैसे आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बड़ी फर्म है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी इंस्टीट्यूशन है, क्या वहां पे हमको ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की जो एबिलिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, जस्ट टू नेम फ्यू, एवरी वन ऑफ अस रिक्वायर्ड टू हैव इट। ओनली डिफरेंस इज he or she work for an organization, he or she has all the same attributes like a successful entrepreneurs. So वो, because they are working for an enterprise or an organization, so they become intrapreneur. They become intrapreneur. But if they set up their own enterprise, they become entrepreneurs. Entrepreneurship is a process. I repeat, entrepreneurship is a development process where you make student entrepreneurs. तो ये जो पूरा हमारा जो अभी तक की जो परिभाषा या हमने डिस्कशन किया,
The whole purpose is to bring students to become entrepreneurs. This is one. Second thing, while we are orienting students on various aspects of entrepreneur and through entrepreneurship, आपको ये बताना पड़ेगा कि you are not going to set up a very big enterprise. In fact, the first startup, I repeat, the first startup, first enterprise may start from your home, from your garage, from your study table. That's how the enterprise is going to start functioning for a student like ours, For few of the students, every may not be starting like this, but most of our students coming from middle class family, they will start from home. That we have to educate. Secondly, India is a big market for service sector. You agree with me? India is a big growing market for service sector, and there is a huge talent, huge potential available for students to become entrepreneur through service sector. So you can see, there are many successful entrepreneurs becoming successful through venturing into service sector where capital investment is less. So please educate your student through this program that they can become entrepreneur by taking up a service sector, which is much more easy, for taking up entrepreneur. Risk भी कम है, capital भी कम है, and that will make them more successful. The last point I would like to add, is that कि एक experience बता रहा है, observations बता रहे हैं कि if the student have couple of years of experience after graduation, I repeat, if the student have some work experience, practical experience, and later on they get into the entrepreneurship, then the success rate, that becomes much more profitable rather than immediately jumping into the entrepreneurship. तो हम बच्चों को कर सकते हैं, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है आज के तारीख में हमारे पास अवेलेबल है. In fact, I will also say that, there are many startups also working in different part of Bihar. Why not your student work voluntarily with those startups just to gain experience, just to gain insight how to do it? अगर हम ये भी अगर हम करेंगे तो I am sure, student will be, confident, they will be very much motivated to take this as a career in a long term. Okay? तो इस पे ऊपर काम करिए. आप बच्चों को बोलिए अगर अकेले में possible नहीं है, why not they work in team? Form a small group, 3, 4, 5 student friends, they can work together and then they can start launching this one. There are many successful stories, many successful example I can tell you about women also, becoming entrepreneurs in the days ahead. Okay, can we go to the next observation, please? Thank you, Professor. Due to paucity of time, now we are moving for further program, Professor, with your kind concern. Please, now please. I hand over to Astik. Astik ji, you can continue. Thank you so much, sir. Thank you so much, respected Professor Rajesh P. Khambyat, sir, for such an insightful and extensive deliberation. Now we have reached to another segment of the program where the School of Education, Mahatma Gandhi Central University, is introducing its first newsletter. I now invite respected Professor Dean, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Professor Ashish Srivastava, sir, for the release of the newsletter. Welcome you, sir. एक छोटा सा संशोधन करें अगर इस कार्यक्रम में, चूंकि हमारे साथ इतने बड़े विद्वान प्रोफेसर राजेश पी खंबात साहब हैं और ये हमारे नया विभाग है, छोटा सा 2 साल 3 साल पुराना विभाग है ये, तो ये जो न्यूज़लेटर का रिलीज है और वो प्रोफेसर खंबात के वचनों से हो तो अच्छा होगा. तो इसका मॉडस ऑपरेंडी ये होगा कि ये न्यूज़लेटर आप स्क्रीन पर प्रेजेंट करें और प्रोफेसर राजेश साहब एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें कहेंगे कि मैं इस न्यूज़लेटर को रिलीज कर रहा हूं, स्कूल ऑफ एजुकेशन के पहले न्यूज़लेटर को. ओके सर. तो सर इस न्यूज़लेटर का एक बस बैकग्राउंड बस बता दूं कि इसके पहले हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, TVET रीइमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स इन इंडिया. ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे ऑर्गेनाइज किया गया था. तो उसमें जो बहुत सारे पेपर कंट्रीब्यूट भी किए गए थे जिसमें 5 मेनली क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी को आज रिलीज करने के लिए उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उन्होंने जो उसको न्यूज़लेटर फॉर्म में सुप्रभा डे ने ही इसे कंसीव किया है आइडिया को, और रेस्पेक्टेड प्रोफेसर ओमकार सर ने इसमें एडिटिंग और बाकी सारे संशोधन किए हैं. तो अब इसको मैं रीकरेक्ट करते हुए या रीमोडिफाई करते हुए आई नाउ इनवाइट respected Professor Rajesh P. Khambyat, sir,
for the releasing of the newsletter. Thank you. मुझे ये जो पहला न्यूज़लेटर है, particularly on TVET India, reimagining and transforming youth skill in India, को रिलीज करते हुए बहुत खुशी हो रही है। और ये जो न्यूज़लेटर है, आप सभी के उपस्थिति में इसको रिलीज किया जा रहा है और मुझे लगता है एक नई शुरुआत महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस न्यूज़लेटर के माध्यम से की जा रही है और मेरी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी टीम के लिए जिन्होंने इस परिश्रम इसके पीछे किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नई शुरुआत के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका हार्दिक धन्यवाद। आस्तिक, इस न्यूज़लेटर के अगर सारे पेज आपके पास हो तो एक बार डिस्प्ले कर दें और फिर इसको हटा लें। yes sir sir, is it now visible, I invite Dr. Paswat Omkar sir to announce the name of the contributors of the newsletter and also the pages. Okay, thank you Astik. Sir, this is on the eve of World Skill Day 2022. The articles were invited, the insights and views of the participants were invited to conceptualize this newsletter. This entire conceptualization of newsletter is being done under the leadership of respected Dean, Professor Ashish Srivastava, Dean School of Education, Mahatma Gandhi Central University, and respected Head, Dr. Mukesh Kumar Sir, Head Department of Educational Studies, School of Education, Mahatma Gandhi Central University. It is a teamwork. This is the entire conceptualization is done by Miss Suprabha Dey, Doctoral Research Scholar, School of Education, Mahatma Gandhi Central University. And sir, we have received the insights from 14 universities across the country. I read one by one. University of Calcutta, West Bengal, Suman Kalyan Rai contributed the insight in TVET India, Reimagining Transforming Youth Skills in India newsletter. And also we have received article from Vishwabharati University, Shantiniketan, Manjira, SK Manjira, M.Ed student, and also from Central University of Jammu. From Central University of Jammu, we received from 4 students and scholars, Sneha Devi, Sachin Kumar, Poonam Pandita, and Shivali Verma. And also from Central University of Jharkhand, Sumida Mukherjee, Central University of Hyderabad, Anubha De, and Devpriya Ghosh. Sanskrit University Mathura, Uttar Pradesh, Asha Kumari Rai, Indian Institute of Teacher Education, Gandhinagar, Tejashwi Vijay Panchal, M.Ed student, University of Burdwan, West Bengal, Anuradha Ghosh, M.Ed student, Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal, Miss Rasmani Karmakar, University of Delhi, Mr. Alok Sarkar, Guru Gobind Singh, Indraprastha University, New Delhi, Miss Rajni Upadhyay, Bani Preeti Kaur, Annamalai University, Tamil Nadu, Mr. Kaushik Das, M.Ed student, Pataliputra University, Patna, Bihar, Mr. Ajit Kumar Verma. And also along with these, there is a faculty members, respected colleagues who contributed in this newsletter. From the faculty corner, Dr. Mukesh Kumar, Head Department of Educational Studies, School of Education, Dr. Rasmi Srivastava, Assistant Professor, School of Education, Dr. Manisha Rani, Assistant Professor, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, and also me, Dr. Patlot Omkar, School Assistant Professor, School of Education. Along with these, Mahatma School of Education, we have different scholars and students who contributed in this newsletter. Kanai Sarkar, Angad Kumar Singh, Ranjan Kumar, Kumari Ritu Singh, Nitish Kumar, Pranab Burman, Saurav Mahato, Ganesh Shukla, Subra Singha Chaudhary, Partha Sarkar, Astik Mishra, Menka Kumari, Moni Parasar, Archana, Rakesh Kumar, and Sunil Kumar Dubey. Along with these, there is in this newsletter, the insights is also there on behalf of Ms. Suprabha Dey, the one who is behind this entire tireless work from last 2-3 months. I could see the work and efforts of Suprabha Dey in conceptualizing this newsletter. So this is the entire newsletter, which comprises the insights of all the scholars and students from different parts of the country, different universities. So with this brief anecdote, I
hand over to Astik. Thank you, sir, for giving. एक बार इसको डॉक्टर ओमकार, ये जो आपके पास पीडीएफ है, इसको आप एक बार पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं वन बाय वन, yes, वन yes, आफ्टर sir, अदर. yes, sir, yes, sir, एक definitely, बार बस glance view only. Okay, sir. Is it moving, sir? Slides are moving? Yes, it's moving, perfectly moving. Okay. Let me, Professor Vinay Swarup Mehrotra is the esteemed resource person on the eve of World Skill Day. So Professor Vinay Swarup Mehrotra's insights also conceptualized in this newsletter. Dr. Madhuri Dubey, a founder, National Skill Network, Hyderabad. Ma'am is also one of the esteemed keynote speaker, esteemed resource person on the eve of National World Skill Youth Day. So along with Suprabha Day's insights, these are the galleries of the on the National World Skill Day. Those clips. These are today's program. Also, we have edited this This today we will incorporate. This is faculty corner. Dr. Mukesh Kumar, Dr. Rashmi Srivastava, Patlo Tomkar, Manisha Rani. Scholars corner. In Scholars Corner, what we have did in invitation, sir, this newsletter has 5 key themes. The theme 1 is strengthening TVET among Indian youth. In this theme, we received these articles. And these are the theme artificial intelligence and TVET. We received this article from University of Hyderabad. And inculcating entrepreneurial skills among Indian youth through formal education. These many insights we received from different students and scholars from different universities. And empowering rural economy through outreach of TVET. These are the articles from different students and scholars. And providing industry demand-oriented TVET provisions to learners through formal education issues. Yes, sir. Thank you, Dr. Omkar. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I now invite Dr. Manisha Rani, ma'am, Assistant Professor, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, to deliver the vote of thanks. Thank you, Astik. Thank you so much for giving me this opportunity. So on behalf of the Department of Educational Studies, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, first of all, we express our heartfelt thanks and gratitude to Professor Anand Prakash Sir, Honorable Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for his moral support and motivation. Thank you, sir. Thank you so much. Now, moving ahead, we sincerely extend our gratitude to our chief guest, Dr. Rajesh P. Khamyas, sir, for giving us his precious time from his busy schedule for sharing his insightful opinion with us and our participants. Sir, you excellently covered research, innovation, and education with relation to entrepreneurship. Along with this, sir, we came by means of your deliberation, we came across to know so many important concepts like skill development, entrepreneurship components, trade, aim, step, BIREC, Startup India, Quest, etc. Sir, with this, you well explained roadmaps regarding entrepreneurship in terms of integration of vocational education with academic education and introducing vocational education in school curriculum. Thank you so much, sir, for your enlightening deliberation. We are truly humbled by your presence, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now, leadership is not a position or title. It is an action and example. With this, we extend our special thanks to Professor Ashish Srivastava, Dean, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, for always inspiring us with his motivational talks and vibrant mentorship. Thank you, sir. Thank you so much. Now, we extend our heartfelt thanks to
to the head of the department, Department of Educational Studies, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, and the convener of this program, Dr. Mukesh Kumar, for his consistent guidance and words of encouragement. Thank you, sir. Thank you so much. We extend our thanks to the organizing secretary of this program, Ms. Suprabha De, doctoral research scholar, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for her tremendous dedication and hard work, which made this program a success. Moving ahead, we sincerely thank Dr. Patlu Tomkar and Dr. Rashmi Srivastava, Assistant Professor, School of Education, Mahatma Gandhi Central University, Bihar, for their time-to-time support. Now, we thank our research scholars, Ranjay Kumar Patel for Swashati Vandana and Mr. Astik Kumar Mishra, coordinator of the day, for successful coordination of this program. Thank you, Astik, and thank you, Ranjay. Moving ahead, we are thankful to our scholars, students, and participants for their enthusiasm and energetic participation throughout the program. Thank you all once again for being with us. Once again, happy Entrepreneurship Day to all of you. Thank you so much. Hand over to you, Astik. Thank you so much, ma'am. Now we have reached to the conclusion of the event. We will conclude the event with the national anthem. Thank you, Astik. Conclude the program. Thank you so much, Professor Rajesh ji. Thank you so much for being with us. Astik, conclude the program. Thank you, sir. My pleasure to do that. With your due permission, can we end the event? Yes, please, Astik. Thank you. So now we are. Thank you, sir. Pranam, sir. Namaskar. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We can leave. Thank you, sir.